हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मल्टीपर्पज़ विड और मेरा नाम है हरीश चौधरी। सो गाइस, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं स्पार्कल्स के साथ और एग्स के साथ। तो मेरे पास कुछ स्पार्कल्स हैं और एक एग है। तो हम स्पार्कल्स को रेत में कुछ इस तरह खड़ा करेंगे, फिर उसके ऊपर हम एग को मतलब स्टैंड करेंगे, फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद उसको हम स्पार्कल्स को बर्न करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है अंडे के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लास्ट में मिलते हैं। Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? अरे अंडा फट गया। ये महाकाल का आशीर्वाद है। देखिए ओह
गाइस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस अंडे के साथ कुछ इस तरह होगा। आपने देखा ही होगा कि अंडा कैसे फट गया जलकर और पूरा वाइट हो गया। और उसमें मुझे मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उसका स्पार्कल है इतनी ऊँची उठेगी। इसका हाइट मतलब लगभग इतना हो गया था। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी हाइट है। और सिर्फ हमने इसमें 50 से 60 ही स्पार्कल्स बस यूज़ किए थे। अगर ज़्यादा करे तो पता नहीं क्या होता। तो आपने देखा कि अंडे के साथ क्या क्या हुआ, पूरा वाइट हो गया जल कर। और उसमें का जो अंदर का जो मतलब ऑमलेट था वो तो पूरा ख़राब ही हो गया, रेत में मिक्स हो गया। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और देखते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो में। बाय।